આપનું સ્વાગત છે. थैंक यू. समय की बर्बादी न करते हुए मैं तुरंत ही अंसुया बहन जी को आग्रह करूंगा कि वे अपना वार्तालाप शुरू करें, जो आज का मृत्यु के साथ साक्षात्कार का विषय है. लेकिन उसके पहले उनका एक अल्प परिचय. अंसुया बहन जयेश भाई देसाई, आप पीएचडी एजुकेशन में हैं, एमएड और बीएड किया हुआ है. वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत से कार्यकारी परीक्षा नियंत्रक और निरंतर शिक्षण और विस्तरण कार्य विभाग के सहायक नियामक के रूप में कार्य अदा कर 19 जून 2007 में रिटायर हुए. आप ब्रिटिश काउंसिल मुंबई के स्कॉलर और कॉमनवेल्थ एशियन फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर एडल्ट यूके काउंसिल के 8 साल तक एशियन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव बनकर चुने गए. आप जर्मनी की ब्रूनो गॉर्निंग सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एवं यूनो संकलित इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड पीस और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पॉपुलेशन एजुकेशन में सक्रिय रहे. आप सूरत की सनातन लॉ से जुड़े हैं और अब त्रिवेणी में भी काफी सक्रिय हैं. आइए आज के रोचक विषय पर आगे बढ़िए. धन्यवाद. आप इंग्लिश में अपना व्यक्तित्व देंगी और 18 मिनट का पहला भाग रहेगा. फिर पुनः गुजराती में रमेश जी आएंगे और उसके बाद अर्चना जी हिंदी में 9 मिनट और पुनः फिर आप आइएगा 18 मिनट. बहुत बहुत धन्यवाद. आपका स्वागत है. Good evening to everybody. Good evening. Good evening. Thank you very much. We have seen dead bodies, but we have never met death. So question arises in our mind, what is death? J. Krishnamurti here comes to our help and says that what is death? According to him, the death is decay in ending death, is ending without motive. Have you ever ended a particular form of pleasure without any motive? Can you end attachment completely? Can you argue with death? Doctors may prolong your life. There is reincarnation as per Indian beliefs. Living is only a means to dying and ending. The ancient Egyptians, the pharaohs and all the things of their daily lives, property, etc., they prepared for death. They say they will cross the river with all our carriers, with all our belongings, with all our properties, and therefore their caves, their tombs were fully filled with the use of their daily life. So living was only a means to an ending, that is dying. That's one way of looking at. The Indian Asiatic outlook believes in incarnation theory. Our daily life, what is that? That is of struggle, conflict, fear, anxiety, experience, expanding your knowledge for your selfishness, the sense of frustration, unhappiness. What happens? You will find out one day that if you do not exercise your will, I will give it up. Then you are struggling with it. You are running away from it, suppressing it, and all the rest of it goes on. Your jealousies, your goals, your worship, your prayers, your rituals, everything comes to an end. The brain, which has carried immemorial memories, your rituals, everything comes to an end. The brain, lacking oxygen, peters out. That is the me, which has collected so much.
The me is the collection of all this. This is obvious. The me is memories. The me is memories, experiences, the knowledge which has been imparted through 40, 60, 30, 20 or 100 years. The me that is attached to this house, to this woman, to this man, to this child, to this furniture, to this carpet. The me that is the experience that I have gathered through a number of years. The knowledge, the pain, and the anxiety, the fears, the jealousies, the hurts, the beliefs being the beliefs. Being a Christian, love of Jesus, love of Christ, all that is me. And that me is just a lot of words, a lot of memories. Get out from all this. It is your time now, but we cling to the norm because we don't know anything else. We cling to our sorrows, that's our. We cling to our life, the life which is pain, anxiety, that is our daily miserable life. And if the mind doesn't cling to it at all, there is an ending to all that. But unfortunately, we never end. We always say, yes, all right, I will end it. But what is going to happen? So we want comfort in the ending. So somebody comes along and says, old boy, believe in this. That will give you tremendous comforts. All the priests throughout the world come and put your shoulder or hold your hand when you are crying. They give you comfort. The love of Jesus, or he will save you, do this and do that. Do you understand this? We are saying the ending in which there is no time, the ending of time, which is death. Dying to everything each minute. That death is not only mysterious, but also it is a great act of purgation. Continuity is degenerating. Continuity is the part of the degenerating process of man, whereas when there is an ending to continuity, something new can take place. Death is tremendous thing. What is death? Obviously, the organism dies. The organism, the body, with its brain, having been misused in various forms of indulgence, contradictions, constant struggle, wears itself out mechanically. It's a mechanism. And with it dies the brain. The brain is the residue, the holder of money. Memory as experience, as knowledge, and from knowledge, experience as knowledge, and from knowledge, experience stored up in the cells of the brain as memory from which the thought arises. When organism comes to an end, the brain also comes to an end, and also thought also comes to an end, because we said thought is a material process. The thought has created the whole structure of me. The me that wants this positive me, that doesn't want that. The me that is fearful, anxious, despairing, loving, lonely, fearful. The me, the movement is brought about by thought, which is also a movement. So that me put together thought, and when the organism dies, thought, which is material process, also comes to an end. Go into it very slowly, and you say, is that all? One has lived, struggled, acquired knowledge, suffered, and so on. And it ends. What is the value of it? What is the value of human being who has lived, struggled, experienced, value in sense? What is the significance of it? Just to acquire,
live such an ugly, stupid, miserable, wicked life and then end? So thought says, no, this is not the end. That the another world is still the moment of thought. The thought invents the time. Time comes to an end, which is death. The another world, the world where you will be happy, the world where you will have all your desires fulfilled, where you will be most extraordinarily rewarded, sitting next to God. And that is the moment of thought also. See what thought does. See the danger thought in the wrong place. Thought has its right place, which is to function where it is absolutely necessary. Technology, language, all that. And thought invents and says that is it there. It is still the moment of thought. So when one asks, when the brain comes to an end through disease, through old age, through an accident, through misuse, the misuse of living, an illusion, living in a belief. All beliefs are illusory. All ideals are not based on fact. There is only fact, not ideals. So the brain comes to an end with the organism. And so the thought comes to an end. Thought is fairly cunning. So thought realizes that this is not the end. There must be. So it continues to an idea that this is not the end. There must be something. So it continues an idea in an illusion, in a heaven or in a hell, everlasting suffering, because you didn't obey the laws of some priest, so that it is. Please follow this. So we are saying, is that the whole meaning of living? You bear children, misery, wars, hate each other, like each other, and suddenly end. So one is always asking, what happens after death? What is before death? Go to school, college, university, get a job, live a livelihood. What a life you lead. This is your life before death. And you want to know living such a miserable life? You want to know what is after death without inventing another world, without saying, yes, there is life after death, all saying, I believe. So if you put aside all that, literally put all that aside, then what are you faced with? The actual fact that you bear that, who is put together by thought, comes to an end. Can you bear that? Can you see the fact of that? All your anxieties, all your lovings to an end. When you die, the brain which holds thought comes to an end. So we are asking, when all this ends, what is there? Look, actually, when you are living as you are, living now, which is vigor, with energy, with all the travel of life, can you live now? Meeting death now? Question is still there. I am living. I am living with my vigor, energy, capacity, thought, with pain and all the rest of it. I am living, and death means an ending to that living. Now, can I bring the ending into my living? That is to live with death all the time. That is, I am attached to you, and that attachment, which is death, isn't it? I wonder if you see this. I am greedy, and when you die, you can't carry greed with you. So, end the greed, not in a week time or 10 days time. End it now. So you are living life with full of vigor, energy, capacity. See the beauty of the world, beauty of the earth, and also the ending of that instantly, which is detached. So to live before is to live with death, which means
that you are living in a timeless world. You are living the life constant. Everything you acquire, you are ending. So, so that there is always a tremendous movement, a certain place you are fixed. Can you do this? Well, thing is another idea. When you another idea, this is not a concept. Invite death, which means the ending of everything that you hold, dying to it each day, each minute, then find out you will there is no you finding it because you are gone. Then there is a state of a timeless dimension in which the movement we know as time. It means emptying all the content of your consciousness. So that is there, no time. What is the relationship of time to death? One has lived 10 years, 50 years, 80 years, or 100 years. A life that is painful, anxious, and all the rest of it, an empty life, a wasted life. And that life comes to an end, both biologically and psychologically. One clings to the knowledge and avoids the unknown, the known suffering, the known pain, the known pleasure, the known fears. One clings to all that which you call living. One is frightened to let go all that which you have to do when death comes. So there is no interval between the living and the dying process. Then what is that dies? Biologically, we have lived so intelligently because biologically, physically, the body has its own intelligence. If you leave it, if you do not spoil it, through taste, through guilt, through smoke, drink, and all the rest of the business that one goes through its own intelligence. That body organically dies, the organ dies, but also we say there is something which is me, which must continue because after all, I have collected so much experience. I want to finish that book before I die. I must be successful. Give me a few more, another years, and so and so and so on. So what is that me that says I don't want to die? I must have some kind of continuity. This is our living, right? This is craving through life. From the ancient days, from the Egyptians down to the present day, and before the Egyptians, the ancient Egyptians ruled the modern Egypt. This has been the problem, a continuing and ending. The desire, the immense drive to continue my pleasure, I want it fulfilled to tomorrow. When you say tomorrow, there is no tomorrow. It becomes a tremendous despair. So there is death. So we have to investigate together, not accepting thought, because I am not your authority or your guru. To me, gurus are dangerous in spiritual life. You have to find out for yourself what is it that is me, how it come into being, why it has taken such tremendous importance in our life, and why is that's so frightened of death. The me has come through words, through experience, through knowledge. The me, which is the form, the name, all bundle of me, memories, knowledge. अंशुया, 3 minutes to sum up. पहला भाग ने 3 मिनट में समाप्त करा. Thank you. Okay. Pleasure, pain, that consciousness which it contains is me. Please see
see it yourself. You say, that's not only me. That is not only mainly memory. Therefore, it is a material process, but there is a me which is spiritual. The Hindus and others maintain, and probably which is spiritual. Some of you maintain that there is something spiritual in me. There is the essence of that spirit. When you say me, the spirit covered over by all kind of darkness, like an onion with many layers. That essence of the highest is me, that is still part of thinking. When you feel that the essence is me, that is a part of your process of thought. Somebody has put in your mind, or you have invented it yourself. You may not believe, but thought has created this. But thought is a material process, as thought is knowledge, experience stored up as memory in the brain, and response to memories, thinking. We went through all that the other day. The thought is a material process. The thought can say, there is a spirit in me. It is a material process. The faith in God being your projection of what you think, is the most beautiful, omnipotent, all the rest of it. It is still a process of thought. So there is nothing but the movement of thought which has created the me, or the essence of the spirit. So it is still thought process, a material one. So when you cling to me, and which is frightened of the unknown, so time is a long interval of living and death. We said time is a moment of thought as measure. So many lives, so many years, which is all measurement. Can that time, which means the living and the dying close together, and death means in the ending of that, which has continued. See how it is that which continues becomes mechanical, and therefore there is nothing new. May invent something new, like the jet. It's intelligence, Einstein's theory. So thought can invent something new, of thought can invent something beyond it. So, yeah, I think this is the we stop first part. here. Yeah, first part was this. Yeah. So रमेश जी, I would invite you कि તમે આવીને પહેલો ભાગ બોલો. रमेश जी का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा कि वे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और LIC में उन्होंने LIC ऑफ इंडिया में से रिटायर हुए डिविजनल मैनेजर की जगह सन 2000 में. उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन की 2010 में अहमदाबाद लॉज से. वे अभी वर्तमान में अहमदाबाद लॉज के प्रेसिडेंट भी हैं और वे अंध जो दिव्यांग लोग रहते हैं, पीपल एसोसिएशंस रहते हैं, या समाज में और भी अंधशालाएं होती है, वहाँ पर काफ़ी लेक्चर्स देते हैं. और समान रूप से ही जो लोग आंखों से नेत्र से देख सकते हैं, उन्हें भी प्रोत्साहन करते हैं कि वे मृत्यु उपरांत अपना आई डोनेशन दें. तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है. आइए रमेश जी, आपका स्वागत है. 9 मिनट में पहला अध्याय जहाँ तक आपने बोला था वहाँ तक. અનમ્યુટ કરો Yes. પ્લીઝ. હા, મૃત્યુ સાથે મુલાકાત સંભળાય છે સર? हाँ जी, संभળાય છે. अर्चना, प्लीज हाँ जी. रिमूव द स्पॉटलाइट्स. મૃત્યુ સાથે મુલાકાત. આપણે નજીકના વાલા કે સગાઓના મૃત્યુ પછીની સ્મશાન યાત્રામાં જોડાઈએ છીએ. શબોને દાટી દેવામાં આવે અથવા અગ્નિદાહ આપવામાં આવે, તે પછી વ્યક્તિઓ સાથેનો સંપૂર્ણ સંપર્ક તૂટી જાય છે.
તો એ જીવાત્માઓનું શું થાય છે? કેમ શૂન્ય થઈ જાય છે? આવા પ્રશ્નોને લઈને જે કૃષ્ણમૂર્તિ સમજાવે છે કે મૃત્યુ શું છે, મનુષ્યને તેમાં કેમ રસ પડે છે? શું માનવીને મૃત્યુના ભયથી મુક્ત થઈ શકે? મૃત્યુની પાછળ શું હેતુ કે પ્રયોજન છે? આપણે સંબંધો, મિત્રો, કુટુંબીઓ, સગાઓ વગેરે સાથેના સંપર્કને શું સંપૂર્ણ રીતે અંત લાવી શકીએ? આ બધી વાતોને બહુ સુંદર રીતે સમજાવે છે અને શરૂઆત કરે છે કે ડોક્ટરો આપણા જીવનને ટકાવી રાખવા માટેના બધા પ્રયત્નો કરે છે અને કરાવતા હોય છે, કરતા હોય છે, પણ એ સમજતા, એ વિચારતા નથી કે શેને માટે. આપણને પણ વિચાર નથી આવતો કે આ શા માટે આપણે આ લંબાવી રહ્યા છીએ, કયો પર્પઝ છે, કયું પ્રપોઝલ છે, શેના માટે આપણે જીવન મળ્યું છે. ભારતીયો માને છે કે જીવન એ મૃત્યુ સુધી ટકાવી રહેવાની ક્રિયા છે. ખ્રિસ્તીઓ મૃત્યુ માટે તૈયારી કરે છે. પૌરાણિક ઇજિપ્તના લોકો જીવન જરૂરી વસ્ત્રો, વસ્તુઓ મૃત્યુ પછીના જીવન માટે સાથે રાખતા હતા. તેઓ માનતા કે મૃત્યુ પછી નદીને પાર આપણા વાહનો, મિલકતો વગેરે સાથે જઈ શકે છે. જીવનને મૃત્યુ પછીનો પણ એ લોકો યાત્રા સમજતા હતા. આપણું દૈનિક જીવન શું છે? સંઘર્ષો, ઘર્ષણો, ભય, ચિંતા, અનુભવો, સ્વાર્થ માટે જ્ઞાનને વિકસિત કરવું, હતાશાઓ વગેરે. પણ એક દિવસ આ બધું છોડી જવાનું. પણ આપણે એના માટે પણ સંઘર્ષ કરીએ છીએ કે આ બધું ન છૂટે. તમારી ઈર્ષ્યાઓ, તમારો ભગવાન, તમારી પ્રાર્થનાઓ વગેરે બધું એક અંત સાથે ભૂસાઈ જાય છે. તમારું મગજ, જેમાં હજારો ઝાંખીઓ તમારા વ્યવહારો બધું ભરેલું છે, તેનો અંત આવી જાય છે. હું આ બધાનો સંગ્રહ કરીને બેસે છે, તો શું હું આ જ્ઞાનમાંથી છૂટી શકે? જ્ઞાતને પકડી રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને સરળતાને કોઈ શ્રદ્ધા રાખવાની કહે તો આપણને ગમે છે. પાદરી આવીને જીસસનો પ્રેમ બતાવશે અથવા આ કે તે કરવાની સલાહ આપશે. તમને આ અંતમાં હવે સમય દેખાતો નથી. બધી સલાહો મળશે પણ હવે તમને સમય નહીં દેખાય, અને આ સમયનો અંત એ જ મૃત્યુ છે. શું બધા સાથે અંત લાવી શકીએ? આપણે જાણવાની જરૂર છે મૃત્યુની પહેલા શું છે. મૃત્યુની પહેલા જાણવાની જરૂર છે. મૃત્યુ પછીનું જાણવાની કરતા પહેલા શું છે એ જાણવાની વધુ અગત્યની વસ્તુ છે. તમે ગુરુ પાસે જાઓ છો, શું બધાના અંતથી ગભરાવ છો? કંઈક જીવનની આ બધી વાતોથી પ્રશ્ન ઉપસે છે કે મૃત્યુ શું છે. તમે માનસિક રીતે બધા ઘટમાળમાંથી પસાર થાવ છો. જીવન એક મોટી નદીની માફક વહેતો શક્તિનો પ્રવાહ છે. તમે તમારા સંપર્કો આ શક્તિ પ્રવાહનો ભાગ છે. તમારું ચૈતન્ય તમારા સંપર્કો છે. સમાજ સાથે, વસ્તુઓ સાથે, જ્યાં સુધી વ્યક્તિઓ તમારી લાગણીઓ, એષણાઓ જે વહેતા પ્રવાહને ભાગ લે છે, તેને બધા ગૂંચવાડા, ઘર્ષણો આવે છે. મન આ બધું સમજે અને તેનું ઉડાણ સમજી રોજબરોજના વ્યવહારોમાં અટવાય છે. જ્યાં સુધી તમારા માનસિક રીતે અનુભવાતા ગૂંચવાડા, ભય વગેરે દૂર ન થાય, ત્યાં સુધી પ્રવાહ રહેવાનો. અને આ પ્રવાહમાં જ્યારે આગળ વધો છો ત્યારે શિક્ષણ, સલાહ વગેરેથી આગળ વધો છો, પણ તમે ગૂંચવાઓ છો. ઘર્ષણો વગેરેને આમાં સમજ્યા વિના આગળ વધી રહ્યા હોઈએ છીએ. એને સમજવું બહુ ખૂબ જરૂરી છે. કોઈક આવીને કહેશે કે આમાં વિશ્વાસ કરો, જે તમને ખૂબ વિશ્વાસ અપાવશે. વિશ્વના બધા ગુરુઓ તમે રડો છો ત્યારે તમારો ખભો પકડીને સમજાવે છે કે જીસસનો પ્રેમ તમને બચાવશે, માટે આ કરો, તે કરો. પણ આ સાથે તમારી પાસે સમય નથી હોતો. આ સમયનો અંત એ જ મૃત્યુ છે.
એના બીજા ભાગમાં એ કહે છે કે દરેક ક્ષણે મૃત્યુનું સર્વસ્વનું દરેક ક્ષણે મૃત્યુ થતું હોય છે. મૃત્યુ એ ફક્ત ગૂઢ રહસ્ય નથી, પણ એક મહાન શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. ક્ષીણતામાં પ્રવાહની ગતિ જ્યારે અટકે છે ત્યારે કંઈક નવું સર્જાઈ શકે છે. મૃત્યુ શું છે? સંજોગોનું મૃત્યુ, જેમાં મગજનું પણ મૃત્યુ, જેનો દુરુપયોગ ઘણી અનિચ્છિત પ્રક્રિયામાં આપણે કરતા રહ્યા છીએ. મગજમાં અનુભવોને યાદ રખાય છે, જેને મગજના કોષો સંગ્રહે છે. આ સંગ્રહાયેલ સંસ્કારોના આધારે જ વિચારો ઉદ્ભવે છે. મૃત્યુની સાથે મગજને આ બધી યાદોનો અંત આવી જાય છે. તો મૃત્યુ શું છે તેનો જવાબ બધાની પાસે પોતપોતાની રીતે સમજીને જે છે એ છે. જ્યારે આપણે કંઈક તદ્દન ગુરુનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે મગજમાં વિચાર યાદોના આધારે આવે છે. હું જે આ માગે છે તે વિચારોના આધારે આપણી પ્રક્રિયા છે. આ બધાનું મૃત્યુ સાથે અંત આવે છે. તમને થાય કે તો પછી આ બધાની કિંમત શું, એનું મહત્વ શું, એની મૂલ્ય શું? વિચાર કહેશે કે આ એમ નથી, બીજું વિશ્વ પણ છે. એવું વિશ્વ મળે જ્યાં તમે સુખી હશો, તમારી બધી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થાય. જુઓ, વિચાર તમને ભયંકર અસત્ય તરફ લઈ જઈ શકે છે. આપણને સ્વર્ગના વિચારો ઘણા બધા કહેવામાં આવતા હોય છે, એની તરફ આપણું ધ્યાન દોરે છે. દેહનું મૃત્યુ રોગ, અકસ્માત વગેરેથી થાય. વિચાર વિચારે છે કે આ સત્ય નથી, હું ચાલુ રહી શકું, આ કેમ મૃત્યુ આવ્યું? તમારી પાસે ઘર્ષણો છે, પણ શું તેનો અંત છે? જાણવાની જરૂર છે કે મૃત્યુ પહેલા શું, નહીં કે મૃત્યુ પછી શું. સ્કૂલ, યુનિવર્સિટી, કાર્યક્ષેત્ર, ઓફિસ, બીજા 40 વર્ષ, આ બધું મૃત્યુ પહેલા થાય છે. આ એક સત્ય છે કે બીજા વિશ્વને શોધ્યા વિના, જેના વિશે ઘણા પુસ્તકો લખાયા છે, પણ કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે કે તમે આ બધાને દૂર મૂકી દો તો જ મૃત્યુને સમજી શકશો. જ્યારે બધું અંત થાય છે ત્યારે શું? અત્યારે તમે જીવો છો. શક્તિના આધારે તો શું અત્યારે તમે મૃત્યુને સમજી શકો? બધા કહે છે કે હું માનું છું, હું જાણું છું. તે બધાને બાજુએ મૂકી દો તો આ વિચારને તમે સહન કરી શકો છો? જ્યારે બધું અંત થાય ત્યારે શું રહે છે? અત્યારે જીવો છો અને મૃત્યુને મેળવો તો બધાનો અંત. તો તમે મૃત્યુ સાથે હંમેશા જીવી ન શકો. આમ થાય તો તમે તમારું જીવન સમજ સાથે, મૃત્યુ સાથે તો ખરું જ, પણ મૃત્યુને એવી રીતે સમજવાનો કે જેથી તમારા જીવનનો ભાગ બની જાય અને કોઈ એક નવી આવનારી પ્રક્રિયા ન રહે. તો શું મૃત્યુ સાથે હંમેશા જીવી ન શકો? આમ થાય તો તમે તમારું જીવન સમજ સાથે, સંતોષ સાથે જીવી શકો ને સતત વહેતું જીવન હશે જ્યાં કોઈ મર્યાદા નહીં હોય. શું આ તમે કરી શકશો? રમેશભાઈ, 2 minutes to sum up. હા, તમે દરેક ક્ષણે મરો છો તો સમય રહિત પ્રવૃત્તિ બનશે. આપણે દરેક ક્ષણે મરીએ છીએ અને એ રીતે પણ વિચારી શકાય છે કે તમને જે આયુષ્ય મળ્યું છે એમાં એક ક્ષણ ઓછી જ થતી જાય છે. એટલે ક્ષણે ક્ષણે આપણે મરતા જ જઈએ છીએ. એ વાત તો સાચી છે જો સમયની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો. પણ એ જ સમયને કઈ રીતે સમજવો અને મૃત્યુનો વિભાગ અત્યારથી જ સમજી લઈને જીવનના ભાગ તરીકે જો આપણે વણી શકીએ તો બને કે એને તમારા ચિત્તને ખાલી કરવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. કરી શકશો? બને કે સમય જતા તમે જ ભૂલાઈ જાઓ, પણ એની ચિંતા ના કરો, તમે તો રહેવાના જ છો. લાગે છે કે બીજો ભાગ છે એ બીજા ભાગની અંદર હું કવર કરી લઈશ, કારણ કે અત્યારે એનો સંપૂર્ણ સમય નહીં હોય. ચોક્કસ. हाँ जी, आगे बढ़िए. अर्चना जी, आपका स्वागत है. एक संक्षिप्त परिचय देता हूँ, फिर आप अपना 9 मिनट के प्रथम भाग पर अग्रसर हो सकती हैं.
अर्चना जी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी मुंबई से उन्होंने किया है और मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी किया है बड़ौदा से। वे सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी कार्यरत रही हैं। स्कूल प्लेस किए हैं, कॉलेज में प्रोफेशनल लेवल की गुजराती और हिंदी इंग्लिश प्लेस में वो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, यूएस और विश्व भर में गई हुई है। FTII पुणे से उन्होंने कोर्स किया है, साथ में कई डॉक्यूमेंट्रीज और कॉर्पोरेट फिल्म में उन्होंने असिस्ट किया है। वे ऑल्टरनेट मेडिसिन प्रैक्टिशनर की तरह क्वालिफाइड हैं और नेचुरोपैथी को फॉलो करती हैं। थियोसॉफी में 2010 से ज्योति लॉ से जुड़ी हुई हैं और आप सभी जानते हैं कि त्रिवेणी में भी काफी सक्रिय है। आइए अर्चना, स्वागत है आपका। थैंक यू तरल जी। आज का एक जटिल विषय मृत्यु क्या है। एम आई ऑडिबल इनफ? यस। मृत्यु क्या है? हमने अपने कई अपनों को मरते देखा है। हम कई अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। शवों को हमेशा के लिए दफना दिया जाता है या तो फिर जला दिया जाता है, जिसे हम अब देख से सुन या बात नहीं कर सकते। जीवित जीवों के साथ क्या होता है और अब ये क्यों नहीं है, हमारे सवालों का सारे जवाब जे कृष्णमूर्ति द्वारा दिया जाता है। कृष्णमूर्ति जी के अनुसार मृत्यु क्या है? अनसुया जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कृष्णमूर्ति जी के वाक्य रखे हैं। उसका मनुष्य मृत्यु में क्यों अंतर्ग्रस्त है? मनुष्य मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हो सकता है? क्या क्षय मृत्यु को समाप्त करने में है, जो बिना मकसद के खत्म हो रहा है? दबाव के बिना, कुछ पाने के लिए, कुछ छोड़े बिना, कुछ और बस खत्म। क्या आपने कभी किसी विशेष प्रकार के आनंद को बिना किसी उद्देश्य के समाप्त किया है? बिना किसी विचारोत्तेजक मांग के लिए, उदाहरण के लिए लगाव किसी मित्र का, किसी परिवार का लगाव, विश्वास या प्रिय के लिए कुछ और। क्या आप अटैचमेंट लगाव को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं? आखिर ये यही सामना करते हैं तो तुम मौत से बहस क्यों कर सकते हो? डॉक्टर अपने आप के हमारे जीवन को लंबा खींच सकते हैं, पर मुझे पता नहीं है कि कोई लंबा क्यों करना चाहता है। वे चाहते हैं कि आप लंबे समय तक जीवित रहे, पर आपने कभी पूछा कि क्यों? यदि आप मृत्यु की ओर देखते हैं और वास्तव में आपका जीवन क्या है? भारतीय मान्यताओं के अनुसार पुनर्जन्म होता है। जीने का अंत मरने का एकमात्र साधन है। यह इसे देखने का एक तरीका है। ईसाई मौत की तैयारी करते हैं और मिस्र के लोग तो मौत के दूसरी छोर कहीं पूरे अपने सारे सामान के साथ जाने की तैयारी करते हैं। वो मानते हैं कि मौत के बाद वो सब सामान वो यूज कर पाएंगे। आपके जीवन का क्या मतलब है? आपका दैनिक जीवन तनाव, संघर्ष, भय, चिंता, अनुभव, अपने स्वार्थ के लिए, अपने ज्ञान का विस्तार के लिए, निराशा की भावना, दुख, ये सबसे लदा हुआ है। आप एक दिन पाएंगे कि यदि आप अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं करेंगे और आप कहेंगे मैं इसे सब छोड़ दूंगा, मगर आप इससे जूझ रहे हैं, आप इसे दबाते हुए इससे दूर भाग रहे हैं और बाकी सब चला जाता है। आपकी ईर्ष्या चली जाती है, आपके देवता, आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना, आपके कर्मांड, सब कुछ समाप्त हो जाता है। जिस मस्तिष्क में हमारी अमर स्मृतियां हैं, जो हमारे तुम्हारे कर्मकांड हैं, वो भी सब समाप्त हो जाता है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वह मैं इतने जिसने कुछ एकत्रित किया है, मैं इन सब का संग्रह है। ये सब यादें, अनुभव और ज्ञान है जो हमने 40, 60, 100 साल में इकट्ठे किए। वह मैं जो इस घर से जुड़ा है, उस महिला से, उस आदमी से, उस बच्चे से, उस कालीन से और या उस फर्नीचर से, मैं जो दर्द और चिंता का अनुभव कर रहा है, ये मैं, भय, ईर्ष्या, चोट, सब में ये मैं और वह मैं। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी यादें हैं। तो क्या मैं ये ज्ञात से मुक्त हो सकता हूँ? ज्ञात को मैं क्या समाप्त कर सकता हूँ? तो कहते हैं जय कृष्णमूर्ति, ये बूढ़े लड़के बाहर निकलो, अब ये समय तुम्हारा है। लेकिन हम ज्ञात से चिपके ही रहते हैं क्योंकि हमें और कुछ जानते ही नहीं। हम अपने दुखों से चिपके रहते हैं क्योंकि वो हमारा है। हम अपने जीवन से चिपके रहते हैं, जीवन जो दर्द है, चिंता है, यही हम सब जानते हैं। बस यही हमारा दयनीय जीवन है
और अगर मन उससे बिल्कुल भी नहीं चिपकता तो सब उसका अंत हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम कभी खत्म नहीं होते। हम हमेशा कहते हैं हाँ ठीक है मैं इसे खत्म कर दूंगा, लेकिन क्या होने वाला है? हम अंत में आराम चाहते हैं तो कोई साथ आता है और कहता है बूढ़े लड़के इस पर विश्वास कर जो तुमको आराम देगा। सारे ये याचक पुजारी संत सारे संसार के आके तुम्हारे कंधे थपथपाते हैं और जब तुम रोते हो तो कहते हैं तुम्हारा हाथ थामते हैं और वो तुम्हें शांति देते हैं। फिर इससे कुछ होता नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि हम अंत कह रहे हैं जिसमें वो अंत नहीं है, मृत्यु है। हर मिनट हर चीज के लिए मरना। अब उन्होंने मृत्यु की बहुत सुंदर से डेफिनेशन करी है। मृत्यु न केवल रहस्यमय है बल्कि ये एक शुद्धिकरण का एक महान कार्य है। हम जानते हैं जिसमें निरंतरता है। निरंतरता मनुष्य की अपक्षयी प्रक्रिया का हिस्सा है, जबकि जब निरंतरता का अंत होता है तो कुछ नया हो सकता है। मौत जबरदस्त चीज है। मृत्यु क्या है? जाहिर तौर पर जीव मर जाता है। जिस जीव का शरीर अपने मस्तिष्क के साथ भोग अंतर्विरोध निरंतर संघर्ष के विभिन्न रूपों में दुरुपयोग किया गया, वह यंत्रवत रूप से एक तंत्र ही है और इसके साथ मस्तिष्क में मर जाता है। मस्तिष्क अवशेष धन का धारक है। स्मृति को अनुभव के रूप में, ज्ञान के रूप में, ज्ञान को अनुभव के मस्तिष्क की कोशिकाओं में स्मृति में संग्रहित किया जाता है, जिससे अपने विचार उत्पन्न होते हैं। जब जीव समाप्त हो जाता है तो मस्तिष्क भी समाप्त हो जाता है और फिर विचार भी समाप्त हो जाते हैं। वह अब ये विचार ने मैं की पूरी संरचना करी है। ये मैं जो सकारात्मक चाहता है, पॉजिटिविटी चाहता है, जो ऐसा नहीं है एक्चुअली मैं जो अर्शुपूर्ण, चिंतित, हताश, लालसा, अकेला और भयभीत है, मैं विचार के आंदोलन द्वारा लाया जाता है और वो भी तो एक आंदोलन ही है। मैं विचार के साथ हो जाता है। विचार जो एक भौतिक प्रक्रिया है वे भी समाप्त हो जाती है। और सिर्फ हासिल करने का क्या महत्व है? एक तरह से एक बदसूरत, बेवकूफ, दुखी, दुष्ट जीवन को प्यार करो और फिर अंत, तो विचार कहता है नहीं ये अंत नहीं है। कि एक दूसरा भी है विचार की दुनिया अभी भी विचार की गति में है। विचार समय का आविष्कार करता है। समय भी समाप्त हो जाता है तो मृत्यु है। और आपकी सारी एक ऐसा मन छलावा भी रहता है कि एक दूसरी दुनिया है, वो दुनिया है जहां आप खुश रहेंगे, वहां आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, ऐसा एक छलावा भी है। जहां आपको ऐसा भी ज्ञात करवाया जाता है जहां आपको भगवान के बगल में बैठ के सब कुछ असाधारण रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। और यही विचार की गति भी है। देखिए कि आपने क्या सोचा। खतरे को गलत जगह पर देखें। विचार का अपना सही स्थान जो कार्य करना है जहां यहाँ बिल्कुल जरूरी है। जैसे कि उन्होंने बताया कि इन्वेंशंस होते हैं, उसमें जैसे आइंस्टाइन के विचार होते हैं, वो विचार आविष्कार करते हैं, नए नए इन्वेंशंस होते हैं। इसलिए तो रोग और मस्तिष्क के अंत कब कैसे होता है। अब आता है विचार के बहुत गहराई से महसूस करें, क्योंकि विचार न सिर्फ धूर्त और चालाक है और वो धार्मिक सोच को वो अपने को निरंतर भ्रम में रखते हैं। क्योंकि आपने ऐसे बोला कि आपने ये पुजारी को नियम नहीं मिला इसलिए आपका ये पालन कर रहे हैं। ऐसे जैसे एक बच्चों से दूसरे बच्चों को डराने में धमकाते हैं, वैसे ही वो मृत्यु के बाद क्या होता है, मगर मृत्यु के बाद क्या होता है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि मृत्यु से पहले क्या होता है। आपने यहाँ सब क्या सीखा स्कूल और जब जाके आप जानना चाहते हैं कि उसके बाद मृत्यु के बाद बिना किसी शब्द के आविष्कार के बिना किया हाँ कहने के बाद भी जीवन है। जी कृष्णमूर्ति जी कहते हैं मुझे विश्वास है कि यदि आप उन सभी को एक तरफ रख देते हैं जो सचमुच एक तरफ देखते हैं तो आप वास्तविक तथ्य का सामना कर सकते हैं। आप वहां है जो विचार से जुड़ा हुआ है, उसका अंत हो जाता है तो क्या आप सहन कर सकते हैं। और उनके कहने कि आपके विचार को धारण करने वाला जब मस्तिष्क समाप्त हो जाता है तो हम ये पूछते हैं कि ये सब खत्म कैसे होगा। जीवन के सभी तरीकों के साथ ऊर्जा से भरपूर हमें जीना है। तो क्या तुम अब जी सकते हो
अब मौत से मिलना वह सवाल कि मैं जी रहा हूं, सवाल ये है कि मैं जी रहा हूं, मैं अपने जोश, ऊर्जा, क्षमता के साथ, दर्द और बाकी सबके साथ जी रहा हूं। मैं जी रहा हूं और मृत्यु का अर्थ है तो उसके जीने का अधिकार को समाप्त कर देना। कृष्ण जी और बहुत ही जटिल में कहते हैं, क्या अब मैं अपने जीवन का अंत ला सकता हूं? यानी हर समय मौत के साथ जीना, यानी मैं तुमसे जुड़ा हूं और हर मोह जो मृत्यु है। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि यदि आप देखते हैं कि मैं लालची हूं, तब तुम मरोगे तो अपना लोभ अपने साथ नहीं रख पाओगे, लालच भी एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी। अर्चना जी 2 मिनट में समाप्त कीजिए। पृथ्वी की विश्व सुंदरता देखें, सुंदरता को देखें और उसी वक्त उसका अंत करें। जो मृत्यु है, जो अलग है, वो उससे अलग हो जाओ, उससे पहले छोड़ जाओ। उसके साथ रहना अर्थ ये है कि आप एक कालातीत दुनिया में जा रहे हैं, एक जीवन जीने के लिए जो कुछ भी आप करते हैं वो समाप्त हो जाता है। और अंत में एक उन्होंने थॉट का बताया कि वो एक जबरदस्त गति से होते हैं। एक थॉट, आप एक निश्चित स्थान पर नहीं होते, आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं कि यह एक विचार है और आप इस अन्य विचार की अवधारणा कर रहे हैं, इसलिए कोई खोज नहीं है। फिर कालातीत आयाम की एक स्थिति है और उसमें ये आंदोलन है। तो मैं यही अपना पार्ट 1 समाप्त करती हूँ। थैंक यू। आप म्यूट हैं। So thought can invent something new, like jet, or just something new of thought can invent something beyond death, but it is still the movement of thought. So we are saying death means the ending of continuity, which is time, which continues is time. Tradition, your beliefs in your God is the movement of time. So we are saying to the something known now. Now, to die to your attachments, it is going to take place when you die. When we die, what organism with its brain dies comes to an end. The brain, which continues memories in its cell as experiments, experiences, knowledge, that brain withers away. So there is an ending of. And then can there be ending of thought while living, which is not 50 years, which does not mean you commit suicide, jump over the bridge, etc., etc. You will die to your pain. That all is that's very easy. That's what one want to cling to the pleasure, to the picture that you have created out of pleasure and pursuit of it. That when the brain decays, it is going to die instantly to attachment, to jealousy, to fear, die. That's problem. Therefore, when there is such death, there is then non-continuity, which means the ending of time. Therefore, a totally different dimension of consciousness, which is not the consciousness with all its content, which is time, which is me, but a totally different kind of a dimension. But I don't die now. One doesn't die.
because one says, I must have a little more time. I want to enjoy my life. I have got a new car, a new wife, a new pleasure, a new job. Please don't let me die immediately. So what happens to that man or woman? Please, this is very important to understand all this. Who says, I am satisfied with things as they are. I have got my property, I have got a good wife, a good husband, and memory and money in the bank, and to with everything else. What happens to that when he sees or he dies? There are two types of beings in the world. The one who dies to everything known, the known structure of thought put together as the me, the attachments of fears, the loneliness, the despair, and therefore, out of despair, hope, all that he dies, to all that there is instant ending. Ending of sorrow is the beginning of compassion. You think about it, do not think about you. You do it. Now, what happens to this man who doesn't do this, who is lazy, indifferent, becomes serious about something which is trivial, or he thinks it is very important to follow Guru, all that is silly stuff? What happens to that man or woman? There are two types of human beings. The one who is dying every minute of a day to everything he has gathered. Therefore, he is never gathering. Psychologically, he has never gathering anything. Therefore, there is no me at all the time. And there is the other man. What happens to him? So, what is the other man? The other man is the human being or the woman. The human being, like every other human being in the world, he has lived in sorrow, in despair, in agony, tears, like the other human beings. So there is this stream of sorrow, the stream, the river of agony, the river of pleasure, the river of violence, all that. He is that stream. He has always been in that stream. It's only the man who steps out of the stream who is different. Otherwise, he is like the rest. This is a sad picture. This is really a great sorrow to see this is happening. Therefore, the man who sees this happening is so compassionate. Therefore, his responsibility is to convey all this. So, immortality is not me. Surviving eternally until the angel Gabriel blows the horn, but there is immediately that is beyond death. When time has come to an end, time is a movement of thought and measure, which is our consciousness. When that consciousness empties itself completely, then there is a state that is totally different. The emptying of the consciousness with its content is a part of meditation. Different theories of death. Are you afraid of death? I have a great news for you. According to recent researches of quantum physics, death is just an illusion, which means we are immortal. What is death? Does death really exist? Does the unconsciousness travel to higher dimensions when we die? What are the different theories to explain life after death? Also, some near-death experiences. What is death then? It is a universal process that eventually occurs in all living organisms. It is inevitable. Brain dead is usually used in all legal definition of death. Usually, death is permanent, irreversible process of all biological functions that is sustained in all biological organisms. The dead body starts decomposing shortly. According to University of Arizona, Stuart Hamrock and British physicist Sir Roger Penrose, consciousness is nothing but information that has been stored at quantum level. Sir Roger Penrose has found evidences
that quantum information is stored in cell structure based on protein-based microtubules. Information is stored at subatomic level. When a person retires, then temporarily this quantum information is released into universe from the microtubule. If he or she revives from his or her unconsciousness, quantum information is challenged back into microtubules, and his experiences, we call it near-death experiences. But if the person is not revived and dies, then this quantum information is spread, exists in universe outside body, as a soul says. Sir Penrose, disciple of Penrose, supported this at Max Planck Institute for Physics in Munich. What happens after death? Various theories to support after death what happens. According to parallel university theory, there infinite number of universe and everything which occurs in some universe, which means in some universe it happens that when death occurs, you cause some circumstances, decisions taken by you or others. There are every possibilities that there you are alive. It becomes reality in other universe. So in this scenario, death makes no reverse. You are always dead, and simultaneously we are immortal. Death is not the terminal truth. According to Robert Lamza, we are immortal and exist outside the time. According to cosmic theory of our consciousness belongs to universe. Therefore, when we die, our conscious returns to cosmos. That who do believe in paranormal activities, they claim that when someone dies, their conscious do not go away anywhere. It wanders with living on earth. In both Hinduism and Buddhism, believe in reincarnation after death. Dimension theory. After death, consciousness moves to higher dimensions. It means we live in the same world after death, but who still alive cannot interact because they are at lower dimensions, but we are with three-dimensional world. Now, near-death experiences. It is personal experiences who is about to die or who is revived from death. It is exactly out-of-body experiences or reason of eternal light of life. Studies show that who died can hear doctors saying he is dead as his brain is still working, although he or she described conversation of doctors around him or her and scenes which were not known to them. Peter Sellers, well-known actor, Shirley, recounts the Sellers' experience in her book, Out on a Limb. Here is his experience. He says, I felt I am out of my body. It just floated out of my physical form, and I saw them cart my body out of hospital. I was not frightened or anything like that because I was fine, and it was my body that was in trouble. The doctor saw that Seller was dead, and they massaged his heart vigorously. Meanwhile, I looked around myself and I saw an incredible, beautiful, bright, loving white light above me. I wanted to go to that white light more than anything more. I know there was love, real love, on the other side of light, which was attracting me, and I remember thinking that is God. This is all. Thank you. Thank you so much. Yes. Ramesh bhai, please continue with your part 2. हाँ, संभळाय છે જી? हाँ जी, loud and clear. हाँ जी.
જે કૃષ્ણમૂર્તિ હવે મૃત્યુનો સમય સાથે સંબંધ ઉપર વાત કરે છે. વ્યક્તિ જીવે છે 10 વર્ષ, 50 વર્ષ, 80 વર્ષ કે 100 વર્ષ, પણ જીવન જેમાં દુઃખદાયક ચિંતાઓ સતાવતી હોય અને તે સાથે જીવે છે, એ જિંદગી જે શું જિંદગી છે? ખાલી ખમ જિંદગી કે અર્થહીન જીવનનો અંત આવે છે. મોટાભાગના કેસીસમાં આવું બને છે, એવું એમનું કહેવું છે. તેનો અંત શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે આવે છે. વ્યક્તિ જ્ઞાતને પકડી રાખે છે અને અજ્ઞાતને દૂર રાખે છે. જાણેલને સહન કરે, જાણેલ દુઃખ, સમજેલ સુખ, અનુભવેલ ભય, આ બધાને પણ મૃત્યુ વખતે છોડતા ગભરાય છે. મૃત્યુ શેનું થાય છે? દેહના બધા અંગો મરે છે, પણ આપણને થાય છે કે હું જીવતો રહીશ, અને હું જીવતો રહ્યો જોઈએ કારણ કે મેં ઘણા અનુભવોને સંગ્રહ્યા છે. ઘણા થોડા વર્ષો, મને થોડાક વધારે વર્ષો આપો જેથી હું આ બધું ભોગવી શકું. તો હું આ કોણ જે મરવા નથી માંગતો? એક અગમ્ય ઈચ્છા ચાલુ રહેવાની રહેતી હોય છે. પૂર્ણ વિરામ આપણને મંજૂર નથી. મૃત્યુથી ગભરાઈ જવાય છે. હું કે જે શબ્દોમાંથી પસાર થયો, જ્ઞાન અનુભવ્યો, એષણાઓ અને ઘર્ષણોમાંથી પસાર થાય છે. ઇજિપ્શિયન સમયથી હજી સુધી આ વસ્તુ ચાલુ જ છે. ચાલુ રહેવાની એક અગમ્ય ઈચ્છા રહ્યા કરે છે. આધ્યાત્મિક જીવનમાં ગુરુ ભયંકર છે. કૃષ્ણમૂર્તિનું કહેવું છે. મૃત્યુથી કેમ ગભરાટ થાય છે? મૃત્યુ સર્વનો અંત છે, પણ હું એ જીવંત રહેવાનો પ્રયત્ન છે. એ હજી વિચારનો ભાગ છે. કોઈને આપ્યો કે તમે ઊભો કર્યો, પણ તે જરૂર વિચાર આપણી પાસે રહે છે. વિચાર એ ભૌતિક પ્રક્રિયા છે. ભગવાનનો વિશ્વાસ એ પણ વિચાર છે. અંદર બીજું કાંઈ નથી, વિચારોનો ખેલ છે. જ્ઞાનને તે આથી પકડી રાખે છે, જ્ઞાતને પકડી રાખે છે અને અજ્ઞાતને દૂર રાખે છે. જીવાના વર્ષોમાં મપાય છે. કઈ રીતે આગળ વધે છે એ પ્રમાણે એનું માપન થાય, માપણી હોય છે. મૃત્યુ એટલે સંગ્રહેલનો અંત, પણ જીવન કંઈક નવું વિચારી શકે. મૃત્યુ સતત પ્રવાહનો ભાગ છે, જે સમયનો પ્રવાહ છે, જે તમારી સાથે જોડાયેલ છે. મૃત્યુ વિચારનો અંત છે, તો શું તમે જીવિત હો ત્યારે વિચારોથી છૂટા ન પડી શકો? તાત્કાલિક મૃત્યુ તમારા સર્વ સંપર્કોથી એક વિચાર છે. સંપૂર્ણ જુદું ચૈતન્યનું પાસું જોવાનું છે. અત્યારની સમૃદ્ધિ, સંબંધો, સ્વાસ્થ્યથી સંતોષ છે. એ જ્યારે મૃત્યુ પામે ત્યારે શું થાય? જે ગુરુ વિકારને સ્વીકારતો નથી તેનું શું થશે? એનું મૃત્યુ કેવું, જેને કશું ભેગું જ નથી કર્યું, એવા પણ વ્યક્તિઓ હોય છે. બીજો માણસ કે જે દુઃખ, હતાશા, ઈર્ષ્યા વગેરેની વચ્ચે જીવતો છે, હંમેશા તે નદીના આવા દુઃખોના પ્રવાહમાં જ રહેતો હોય છે. આ જોતા દુઃખ થાય છે. શાશ્વતતા હું નથી, પણ મૃત્યુને પાર પણ શાશ્વતતા છે, અમરતા છે. જ્યારે ચૈતન્ય સંપૂર્ણ ખાલી થઈ જાય, ધ્યાન કે બીજી રીતે, ત્યારે આપણને એ દેખાય છે. હિન્દુઓ અને તમારામાંથી ઘણા માનતા હશે કે હુંમાં આધ્યાત્મિકતા છે, હુંની ઉપર બધા અંધકારના પડોળો છે. આ વિચારથી જ ઘડાયેલા છીએ. વિચાર એ ભૌતિક પ્રક્રિયા છે, જે મગજના અનુભવોને યાદોના સ્વરૂપમાં સંગ્રહે છે, અને તેમાંથી જે પેદા થાય છે તે વિચાર છે. મને ઈશ્વરમાં વિશ્વાસ છે એ પણ એક ભૌતિક પ્રક્રિયા છે. એટલે કે વિચારોની પ્રક્રિયા જ હુંને ઊભો કરે છે. આપણે કહીએ છીએ કે સમય એ વિચારની પ્રક્રિયા રૂપે છે અને આથી વર્ષોમાં મપાય છે. શું આ સમય થંભી જઈ શકે?
આનો અર્થ જીવન અને મૃત્યુનું બંને એક વિચારનો ભાગ બની જવું. કેટલાક એવા છે જે મૃત્યુ સમયે વધુ જીવવા માંગે છે, કારણ કે એમણે ભેગી કરેલ વસ્તુઓ, ભોગોને ભોગવવા માંગે છે. નવી પત્ની, નવી કાર, નવું મકાન, નાણાં, ધંધો બધાને ભોગવવા માંગે છે. એના માટે એ મૃત્યુ માટે સમય માંગે છે. કેટલાકને મૃત્યુ સમયે બધું છૂટી જતા ભય લાગે છે, એકલતાનો, હતાશાનો. આ બધી વસ્તુ એને ઘેરી વળે છે કે હવે શું થશે, હું એકલો પડી જઈશ, આ બધા અહીંયા રહેવાના છે ને એકલો ચાલી જવાનો. તે વિચારે છે કે આ બધાનો અંત આવી જશે. દુઃખની લાગણીઓના અંતથી સહાનુભૂતિની શરૂઆત થાય છે. જે લોકો આળસુ બની જાય છે અને એવી ચીજો પાછળ તણાઈ જાય છે કે જેનું કોઈ મહત્વ જ નથી હોતું, અને તેના માટે બહુ ઊંચો અભિપ્રાય ધરાવતા રહે છે અને એની પાછળ સમય વ્યતીત કરતા રહે છે. અંતમાં જ્યારે એમને ખબર પડે છે ત્યારે તો સમય ચાલી ગયો હોય છે. વિશ્વમાં બે જાતના વ્યક્તિત્વો છે કે જે દરેક ક્ષણે બે જાતના વ્યક્તિત્વ છે. એમાંથી એક એવું છે કે જે દરેક ક્ષણે મૃત્યુને અનુભવે છે અને એ સમજે છે કે હવે આ મૃત્યુ ક્ષણે ક્ષણે આવવાનું જ છે, હવે એની કોઈ એ નથી. આપણે લેટ અસ લીવ ધ મેટર, આઈ મીન મોમેન્ટ્સ વિચ વી હેવ. આપણી જે ક્ષણો મળી છે એને આનંદથી આપણે ભોગવીએ. આ જે વસ્તુઓ ભેગી કરી છે તે ચાલી જ જવાની છે, એટલે માનસિક રીતે એ ભેગું કરતો જ નથી. આ એક બહુ સુંદર એમ કે એક વ્યક્તિત્વ હોય છે. બીજી એવી વ્યક્તિઓ કે જેમાં દુઃખની લાગણીઓ, હતાશાઓ, દુઃખના આંસુઓ વગેરેથી ઘેરાયેલો હંમેશા ઘાતકીપણાના નદીમાં તરતો રહે છે. આમાંથી જે બહાર આવે તે જંગ જીતી જાય છે. જે લોકો આને જોઈ શકે છે, તેમને જાણવા, જે લોકો આ બધું જાણી શકે છે, એ કૃષ્ણમૂર્તિ એમ કે છે કે તેને બધાને જણાવવાની એની જવાબદારી છે. આ બધું જોતા શાશ્વતતા કે અમરતા મૃત્યુની પેલે પાર છે. જ્યારે આપણા વિચારો ચૈતન્ય દ્વારા ખાલી થઈ જાય છે ત્યારે એક જુદું જ વિશ્વ સ્થપાય છે. ચૈતન્યના સંગ્રહમાંથી ખાલી થઈ જવું, આ એક નવું વિશ્વ છે. એનો ખ્યાલ એક બહુ સુંદર નાના વાક્યથી આપે છે કે ચૈતન્યના સંગ્રહમાંથી ખાલી થઈ જવું એ ધ્યાનનો એક ભાગ છે. અને જ્યારે આપણે એ સ્ટેજ પર જઈએ છીએ ત્યારે પછી મૃત્યુનો ભય રાખવાનું આપણા માટે કોઈ કારણ રહેતું નથી. વાહ. મૃત્યુ વિશેના વિવિધ મંતવ્યો. મૃત્યુથી ગભરાતા મનુષ્યો માટે એક સુંદર સમાચાર છે. ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સના તાજેતરના સંશોધનમાં જણાવાય છે કે મૃત્યુ એક ભ્રમ છે. એટલે આપણે એક અવિનાશી કે અમર છીએ. શું ખરેખર મૃત્યુ તો અસ્તિત્વ ધરાવે છે? શું મૃત્યુનું આપણું ચૈતન્ય ઉચ્ચ કક્ષા તરફ પ્રગતિ કરે છે? મૃત્યુ એ જીવન દરેક વ્યક્તિમાં ઉભરતી વૈશ્વિક પ્રક્રિયા છે, કારણ કે એનો સમય ફિક્સ છે. એટલે હંમેશા ક્ષણે ક્ષણે એની પ્રક્રિયા ચાલુ જ છે અને આ અનિવાર્ય છે. મૃત્યુમાં શારીરિક બધા જ કાર્યોનો અંત આવે છે. મૃત્યુ પછી ટૂંક સમયમાં શરીર તો ગળવા લાગે છે. યુનિવર્સિટી ઓફ એરિઝોના અને બ્રિટિશ વૈજ્ઞાનિક સર પેન રોઝ એના મુજબ, એટલે એમના મંતવ્ય મુજબ, ચૈતન્ય બીજું કશું નથી, ફક્ત માહિતીને યોગ્ય પ્રમાણમાં ગોઠવેલ, એટલે કે ઓટોમેટિક લેવલ પર રખાય છે. જ્યારે મનુષ્ય મૃત્યુ પામે ત્યારે માહિતીને વિશ્વમાં માઇક્રો ટ્રિબ્યુન દ્વારા છોડી મુકાય છે. એ દ્વારા આખી વિશ્વમાં ફેલાઈ ગઈ છે તમારે. અને જો તે વ્યક્તિ પાછો જીવિત થાય છે તો તેની માહિતી પરત માઇક્રોટ્યુબ્યુલ્સ દ્વારા પાછી આવે છે, જેને આપણે સજીવન વ્યક્તિના મૃત્યુ સમયના અનુભવો તરીકે ઓળખીએ છીએ. પણ જો તે પરત ન ફરે તો તેનો ક્વોન્ટમ માહિતી તેના શરીરથી અલગ એક આત્મા તરીકે રહે છે. આ એક એ લોકો હવે ધીરે ધીરે આપણે જે આત્માની વાત કરતા હતા તેના તરફ આવતા જાય છે. ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ એક આત્મા તરીકે રહે છે તેમ મ્યુનિચના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ફિઝિક્સના પ્રોફેસર પણ માને છે. મૃત્યુ પછી શું થાય છે તે વિષયમાં
ઘણી સૈદ્ધાંતિક વાતો આવી છે. પેરેલલ યુનિવર્સિટીના મત મુજબ અગણિત બીજા વિશ્વો છે ને આત્મા તે વિશ્વમાં એક એક એના કર્તવ્ય અને એના જ્ઞાન મુજબ ફરતો જાય છે ને ત્યાં તે જીવિત હોય છે. તે હંમેશા એક વિશ્વમાં મૃત હોય છે ત્યારે બીજા વિશ્વમાં એ જીવિત હોય છે. મૃત્યુ એ અંતિમ સમય નથી. રોબર્ટ લેન્ઝા મુજબ આપણે અવિનાશી છીએ અને સમયની બહાર હાજર છીએ. આપણા ચૈતન્યની વિશેની કોસ્મિક થિયરી વૈશ્વિક છે. પેરાનોર્મલ ગતિવિધિમાં જોડાયેલા માને છે કે મૃત્યુ પછી તેમનું ચૈતન્ય બહાર ક્યાંય જતું નથી પણ જીવંત વિશ્વમાં જ રહે છે. સોરી, એક મિનિટ. હિન્દુ અને બુદ્ધ થિયરી છે પુનર્જન્મમાં માને છે. ડાયમેન્શનલ સિદ્ધાંત મુજબ મૃત્યુ પછી ચૈતન્ય ઉચ્ચ ક્ષેત્રોમાં રહે છે અને નીચી કક્ષાના જીવો સાથે વ્યવહાર નથી કરી શકતા. એટલે આ બે ઉચ્ચ અને નીચે કક્ષાની વાત કરી. બીજું મૃત્યુ કક્ષા અનુભવ એટલે કે નિયર ડેથ એક્સપિરિયન્સ. મૃત્યુ પામેલાને નજીકમાં જ પરત જીવિત થાય તે અનુભવો દર્શાવે છે. આવા જ એક વ્યક્તિના અનુભવોને સિરલે હેકલેઇન એક પોતાના પુસ્તકમાં જણાવે છે અને પુસ્તકનું નામ છે આઉટ ઓન એ લિમ્બ. અને એમાં એ વ્યક્તિએ જે પોતે કહ્યું એ એના શબ્દોમાં જણાવે છે, મેં અનુભવ્યું હું મારા શરીરથી બહાર આવી ગયો છું. મેં તેમના મારા શરીરને હોસ્પિટલમાંથી બહાર લઈ જતા પણ જોયો. હું ગભરાયેલ ન હતો કારણ કે મારું શરીર મુશ્કેલીમાં હતું, હું નહીં હતો. ડોક્ટરે તેની છાતી પર મસાજ પણ કરી અને એમણે એટલે એ વ્યક્તિએ ચારે બાજુ જોયું અને એણે શું જોયું કે એણે પ્રકાશ સાથે ખૂબ તેજસ્વી સુંદર સફેદ પ્રકાશ મારી ઉપર દેખાયો. હું તે પ્રકાશ સાથે જવા માંગતો હતો. મને તે પ્રકાશની પાછળ સાચો પ્રેમ દેખાયો જે મને આકર્ષી રહ્યો હતો. મને અને એ યાદ કરું છું ત્યારે મને લાગે છે કે જરૂર એ ઈશ્વર જ હતા. એટલે આવો એક અનુભવ થયો છે. અહીંયા હું એક વસ્તુ ધ્યાન દોરવા માંગુ છું કે આ જે વાત કરે છે કે આ શરીર જતું રહે છે પછી એક એવું કોઈ તત્વ રહે છે, તો આપણે ત્યાં આ વસ્તુ તો પહેલેથી જ આપણે કહીએ છીએ કે આત્મા તો જીવંત જ રહે છે અને ભલે શરીર મરી જાય આત્મા તો રહેતો જ હોય છે. બીજું એ લોકો કહ્યું કે હવે ઘણા વિશ્વો છે ને એમાં પેલો આ સોલ ફરે છે. તો આપણે ત્યાં પણ એ તો બધા ક્યારના ઘણા લોકોની વાત આપણે ત્યાં આપણા શાસ્ત્રોમાં ઓલરેડી હતી જ. કદાચ એ લોકોને હવે ખ્યાલમાં આવતો હશે. બીજું માઇન્ડમાં સંકળાયેલા વિચારો જીવિત રહે છે એવું એમણે શોધી કાઢ્યું. પણ આપણે તો ઓલરેડી કહેતા હતા કે ભાઈ સંસ્કારો તો રહે છે જ અને તે પુનર્જન્મમાં પણ એની સાથે જ એના આત્મા સાથે આવે જ છે. એટલે આ બધી વાતોને આપણે આપણા શાસ્ત્રોમાં હતી અને હવે લોકો વૈજ્ઞાનિક રીતે સાચી માનવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. મને જે તક આપી એ બદલ તરલ મુનશી સાહેબ અને બધાનો આભાર માનું છું. रमेश भाई थैंक यू सो मच. बहुत सुंदर रीते ये आपने बहुत सुंदर तरीके से अपनी भाषा में किया. अर्चना जी फाइनली लास्ट पार्ट के लिए आ जाइए. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. अनसुया जी ने जी कृष्णमूर्ति जी की बात इंग्लिश में बहुत सुंदर से कंठित संकलित की है और रमेश भाई की सरल गुजराती में इससे बहुत ज्यादा अर्थ मिला. अब मैं इसमें हिंदी का अनुवाद शुरू करती हूँ पार्ट 2 का. अब मृत्यु का अर्थ है कि जो जारी है उसका अंत. देखिए कि जो चलता रहता है वह कैसे यांत्रिक हो जाता है और इसीलिए कोई नई बात नहीं है. जेट की तरह कभी कभी नया आविष्कार कर सकते हैं. ये कुछ आइंस्टाइन के सिद्धांत है. तो विचार कुछ नवा आविष्कार कर सकता है वर इससे परे कुछ आविष्कार कर सकता है. लेकिन ये अभी भी विचार का क्षण. हम कह रहे हैं कि मृत्यु का अर्थ है निरंतरता का अंत जो कि समय है.
जो निरंतर है वो समय है, परंपरा है। अपने भगवान में आपका विश्वास समय का क्षण है। तो हम अभी ज्ञात कुछ के लिए कह रहे हैं, अपने आसक्तियों से चिपके रहने के लिए। अब तय ये होगा कि जब आप मरेंगे, जब हम मरते हैं, तो कौन सा जीव अपने मस्तिष्क के साथ मर जाता है, समाप्त हो जाता है। मस्तिष्क जिसे अपनी कोशिका में स्मृति को प्रयोग, अनुभव, ज्ञान के रूप में जारी रखा है, जिसे मस्तिष्क देखता है। तो अंत है या क्या अंत है और क्या? जीवित रहते हुए विचार करने पर अंत हो सकता है, जो 50 साल बाद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आत्महत्या कर लें, पुल पर कूद जाएं, जिसका मतलब है कि आप अपनी खुशी के लिए मर रहे हैं, आप अपने दर्द के लिए मर जाएंगे। निश्चित रूप से आसान है, यही वह है जिसे आप आनंद से पकड़ना चाहते हैं, उस चित्र से जिसे आपने आनंद और उससे अनुसरण से बनाया है। कि जब मस्तिष्क का क्षय हो जाता है तो वह तुरंत ईर्ष्या के मोह में मर जाता है, भय से मर जाता है, मरने के डर से कि ईर्ष्या के लगाव से मर जाता है। यही तो समस्या है। इसीलिए जब अचानक मृत्यु होती है तो निरंतरता नहीं होती, जिसका अर्थ है कि समय का अंत होना। आगे वो बताते हैं जय कृष्णमूर्ति जी कि इसलिए चेतना का एक पूरी तरह से एक अलग आयाम है जो चेतना नहीं है, इसकी सभी सामग्री के साथ जो मैं में है, लेकिन एक पूरी तरह से अलग तरह का आयाम है। लेकिन जब वह मरता नहीं, कोई मरता नहीं है क्योंकि कोई कहता है कि मेरे पास थोड़ा और समय होना चाहिए, मैं अपने जीवन का और आनंद लेना चाहता हूँ, मुझे एक नई कार, एक नई पत्नी, एक नई खुशी और एक नई नौकरी मिली है, कृपया मुझे उस तुरंत मरने ना दे। तो उस आदमी या औरत का क्या होगा? कृपया ये सब समझना बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहता है कि मैं चीजों से संतुष्ट हूं जैसी भी वह हैं। मुझे मेरी संपत्ति मिल गई है, मुझे एक अच्छी पति और एक बैंक में सारा पैसा, बाकी सब कुछ साथ नरक में मिला है। उस आदमी का क्या होता है जब वो मर जाता है? दुनिया में दो तरह के प्राणी होते हैं। जय कृष्णमूर्ति जी समझाते हैं कि दो तरह के प्राणी हैं। एक जो जाने पहचाने सब कुछ के लिए मर जाता है, विचार की ज्ञात की संरचना में मैं के रूप के साथ रखा गया है, और भय के संलग्न अकेलापन और निराशा है, और इसीलिए निराशा की आशा से वो बाहर है। वह सब कुछ मर जाता है जिसका तत्काल अंत होता है। दुख का अंत करुणा की शुरुआत है। बहुत सुंदर वाक्य, दुख का अंत करुणा की शुरुआत है। आप इसके बारे में सोचते हैं, आपके इसके बारे में नहीं सोचते हैं। अब इस आदमी का क्या होगा जो ऐसा नहीं करता, जो बिल्कुल आलसी है, उदासीन है, तुच्छ है, उसके प्रति गंभीर हो जाता है और वो सोचता है कि गुरु का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। उस आदमी और औरत का क्या होता है? अब वापस वो कहते हैं कि मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो दिन में हर मिनट मर रहा है, जो कुछ भी उसने इकट्ठा किया इसीलिए वह कभी भी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, और वो मनोवैज्ञानिक रूप से उसने कभी कुछ इकट्ठा एक्चुअली किया ही नहीं है, इसलिए हर समय कोई उसका मैं नहीं होता। और दूसरा आदमी वो होता है, उसे क्या होता है? वो दूसरा पुरुष या इंसान या महिला दुनिया में हर दूसरे इंसान की तरह है। वह दुख में, निराशा में, पीड़ा में, अन्य मनुष्यों की तरह आंसुओं में ही जीता है। तो दुख की ये धारा है, वेदना की नदी की धारा है, सुख की नदी है, हिंसा की नदी है, ये बस उसी सब धाराओं में बहता रहता है और फिसलता रहता है। और इस धारा से बाहर निकलने वाला जो आदमी होता है वो अलग होता है, अन्यथा वो औरों के जैसा ही है। ये बहुत ही दुखद तस्वीर है, ये देखना वाकई ही बहुत बड़ा दुख है। ये हो रहा है, इसीलिए ये सब बताना उसकी जिम्मेदारी है। तो अमरता मैं नहीं है। जब तक एंजल गैब्रियल मौत को फूंक नहीं देता तब तक अनंत काल तक जीवित रहना। जब समय समाप्त हो गया है, प्रकार, विचार और माप की गति जो हमारी चेतना है, वो जब तक वो चेतना पूरी तरह से होती है, एक स्थिति होती है जो पूरी तरह से अलग होती है। अपनी सारी सामग्री के साथ चेतना को खाली करना ध्यान का एक हिस्सा है। बहुत ही सुंदर तरह से मेडिटेशन को उन्होंने समझा है कि अपनी सामग्री के साथ चेतना को खाली करना ध्यान का ही एक हिस्सा है।
और आगे वो कहते हैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में। उन्होंने कहा है कि नया मृत्यु के विभिन्न विभिन्न सिद्धांत। उन्होंने पहले सवाल पूछा कि आप मौत से डरते हैं? मेरे आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्वांटम फिजिक्स के हाल के शोध के अनुसार मृत्यु केवल एक भ्रम है, जिसका अर्थ है कि हम अमर हैं। तो फिर मृत्यु क्या है? क्या वास्तव में मृत्यु होती है? जब हम मरते हैं तो क्या चेतना उच्च आयामों में बदल जाती है? मृत्यु के बाद जीवन को समझाने के विभिन्न तरीके क्या हैं? कुछ निकट मृत्यु का अनुभव भी करते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस, कि मृत्यु क्या है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो अंततः सभी जीवित जीवों में होती है। ब्रेन डेड का उपयोग आमतौर पर मृत्यु की सभी कानूनी परिभाषाओं में किया जाता है, जो कि सभी जैविक क्रियाओं की स्थायी अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है, जो सभी जैविक जीवों में बनी रहती है। कुछ ही देर में शव सड़ने लगता है। एरिजोना विश्वविद्यालय के स्टुअर्ट हैम्ब्रॉफ और ब्रिटिश फिजिसिस्ट विज्ञानी सर रॉजर पेन रॉज ने के अनुसार चेतना क्वांटम स्तर पर एक संग्रहित जानकारी के अलावा और कुछ भी नहीं है। सर रॉजर पेन बताते हैं, इसका प्रमाण पाया है कि प्रोटीन आधारित माइक्रोट्यूब्यूल्स पर आधारित कोशिका में ये संरचना में क्वांटम जानकारी संग्रहित होती है। जब कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से सेवानिवृत्त होता है, रिटायर होता है, तो उस सूचना उप परमाणु स्तर पर संग्रहित होती है। ये क्वांटम जानकारी सूक्ष्म नलिकाओं से ब्रह्मांड में जारी की जाती है। यदि वह चेतना से पुनर्जीवित हो जाता है तो क्वांटम सूचना को सूक्ष्म नलिकाओं में वापस चुनौती दी जाती है और उसका अनुभव हमें निकट मृत्यु अनुभव, जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। लेकिन अगर व्यक्ति को पुनर्जीवित नहीं किया जाता तो और आसान वो पुनर्जीवित नहीं हो पाता, तो यह क्वांटम जानकारी फैलती है पूरे ब्रह्मांड में शरीर के बाहर और वो वहां मौजूद रहती है, क्योंकि ये आत्मा कहती है। सर पेन रॉस यही कहते हैं कि वो एक आत्मा है जो शरीर के बाहर मौजूद रहती है। म्यूनिक की भौतिकी हैंक्स प्लैंक संस्थान में डॉक्टर पेन के जो शिष्य थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है कि ये आत्मा शरीर के बाहर कोशिकाओं के द्वारा रहती है। फिर अब होता है कि मरने के बाद क्या होता है। मृत्यु के बाद समर्थन करने के लिए विभिन्न सिद्धांत क्या होते हैं। समांतर विश्वविद्यालय या पैरेलल यूनिवर्सिटीज के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांडों की अनंत संख्या है और जो कुछ ब्रह्मांड में होता है, जिसका अर्थ है कि किसी ब्रह्मांड में ऐसा होता है कि जब मृत्यु होती है परिस्थितियों का कारण बनता है और आपके लिए निर्णय गए कि सभी संभावना है कि आप वहां जीवित हैं, ये दूसरे ब्रह्मांड में एक वास्तविकता बन जाता है। इसीलिए इस परिदृश्य में मृत्यु को कोई उलट नहीं कर सकता। आप हमेशा मरे हुए भी हैं और साथ ही साथ अमर भी हैं। रॉबर्ट लेंजा के अनुसार मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। उनका ये कहना है, हम अमर हैं और समय के बाहर हम मौजूद हैं। ब्रह्मांडीय सिद्धांत के अनुसार हमारी चेतना ब्रह्मांड से संबंधित है, इसीलिए जब हम मरते हैं तो हमारा चेतन ब्रह्मांड में लौट जाता है। और इसी तरह यही जो हम मानते हैं कि ये असामान्य जो लोग असामान्य गतिविधियों में विश्वास करते हैं, वे साफ करते हैं कि जब कोई मरता है तो उनका चेतन कहीं जाता नहीं, वो पृथ्वी के रहने के साथ ही भटकता है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों ही मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। अब आयाम थोड़े सिद्धांत। मृत्यु के बाद चेतना उच्च आयामों की ओर बढ़ती है। इसका मतलब है कि हम मृत्यु के बाद एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन जो अभी भी जीवित है वे हमसे बातचीत नहीं कर सके क्योंकि वे निचले आयामों पर हैं, लेकिन हम त्रिआयामी दुनिया के साथ हैं। मौत के करीब के अनुभव, अब इसके बारे में नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ये एक व्यक्तिगत अनुभव है जो मरने वाला है या जिसे मृत्यु से पुनर्जीवित किया गया है उससे हुआ है। ये वास्तव में शरीर के अनुभवों से बाहर या जीवन के शाश्वत प्रकाश की प्रतिध्वनि है।
अध्ययनों से पता चला है कि किसकी मृत्यु हुई, क्या आप डॉक्टर कह सकते हैं कि वह मर चुका है? क्योंकि उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा है, हालांकि वह अपने आसपास के डॉक्टर की बातचीत का वर्णन करता है जो डॉक्टरों को पता नहीं था। और जाने माने अभिनेता पीटर सेलर्स का उन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है। पीटर सेलर्स के मौत के करीबी अनुभव से, नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरे थे, जो शर्ली मैकलीन हीरोइन ने अपनी किताब आउट ऑफ अ लिम्ब के में इस अनुभव को याद किया है। यहाँ उनका अनुभव है, खैर उन्हीं के शब्दों में, खैर मुझे लगा कि मैं अपने शरीर से बाहर हो गया हूँ। ये सिर्फ मेरे भौतिक रूप से बाहर निकला और मैंने देखा कि वे मेरे शरीर को अस्पताल से बाहर निकालते हैं। मैं भयभीत या ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं ठीक था और इसमें मेरा शरीर था वो जो परेशानी में था। डॉक्टर ने देखा कि सेलर मर चुका है और उसने जोर जोर से उसके दिल की मालिश भी की। इस बीच मैंने अपने चारों ओर देखा, पीटर सेलर्स के अनुभव के बारे में कह रहे हैं। इस बीच मैंने अपने चारों ओर देखा और मैंने अपने ऊपर एक अविश्वसनीय, सुंदर, उज्जवल, प्रेमपूर्ण सफेद रोशनी देखी। मैं किसी और चीज से ज्यादा उस सफेद रोशनी में जाना चाहता था। मुझे पता है कि प्रकाश की दूसरी तरफ प्यार, सच्चा प्यार था जो मुझे आकर्षित कर रहा था, और मुझे याद है कि वो भगवान थे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अर्चना जी, तीनों। अनुसया बहन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी और अर्चना जी विशेषकर बहुत अल्प समय में आपने बहुत खूबसूरत तैयारी की। अनुसया बहन आपने बहुत अच्छी तरह किया, और अब हम सब ओपन फोरम की ओर जा रहे हैं, जिसे जो कुछ भी कहना हो शॉर्ट में बड़े अच्छे तरीके से इस विषय के बारे में या कुछ प्रश्न पूछना हो तो उसके बारे में कह सकते हैं। अनिल कुमार बरुआ जी, आप भी कुछ कहना चाहते हो तो कहिए। अबान जी हैं, चंद्रकांत शिंदे जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। सुषमा जी तो हैं ही। जी आप म्यूट हैं। अनिल जी आप बोल रहे हैं मगर आप म्यूट हैं। अनिल, Yes. I just want to add that date actually, we should take it positively actually. That is the thing. Everybody is afraid of death, of course, but that death should be converted into something positive, because every day we die actually. Suppose there is we breathe in and breathe out. Once we fail to breathe in, means that is death. Any time we can die. So best thing is we should not be afraid of death. We should always think that anytime it can come, so let us make it positive. Let us do some good thing. Say we can do daily meditations just to start with in the morning. Then let us do some, we will not quarrel with anybody. We will not, kisi ka sath jhagda nahi karega. Then like that, some positive things, a good thing, I will always try to do a good thing for, because any day I can die. So that is, I think that will give some positivity in life. That's all. Thank you, sir. थैंक यू अनिल कुमार जी। जी शिंदे जी, अन्य कोई भी, अबान जी जो भी बोलना चाह रहे हैं। Yes. May I speak? या प्लीज प्लीज अबान जी बोलिए। Usually we have the concept that death is something which is very difficult to accept. But I think whenever we have read any spiritual books or philosophy books, when any that is near-death experiences are explained, I think most of us who are related to all these theosophy and all philosophies and all the scriptures, that fright is going away. Because each and every NDE, near-death experience people have said
the life over there is much better than what we have experienced here. Only thing that we see our dear ones crying over us, which is making us very sad. And of course, then they come back again on the earth. NDE is that only. Death experience, they experience death, and they have described in many different ways. And I have also in my class given many examples how beautiful it is there and how they are all happy. So on this note, I should say death is not to be afraid of, and welcome in the sense comes, accept it and go ahead on the path of the light. Thank you. Thank you, अवन जी, चंद्रकांत जी, शिंदे जी या वासुमती जी भी आ गई हैं। हाँ हाँ, नमस्कार सभी लोगों को जी। और सर्वप्रथम तो मैं ना, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये बलात् आकर्षित कर लेता है अपनी ओर कि क्या विचार आ रहे हैं। तो जय कृष्णमूर्ति के जो स्टेटमेंट्स हैं उनके आधार पर इसे अनसुईया बेन ने प्रस्तुत किया। बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया और मुझे लगता है कि जो नजरिया है इसमें केवल नजरिया बदलने की बात आई और प्रतिपल होती हुई मृत्यु के साथ जीना, प्रतिपल होती हुई मृत्यु। यहाँ पर निगेटिविटी की बात नहीं है, किसी चीज को भी बहुत गहराई से जब हम देखेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ हमको लर्निंग मिल ही जाती है। और प्रतिपल होती हुई मृत्यु का तात्पर्य यही जो हमारी देहात्मा से कंसर्निंग जितना भी विषय क्षेत्र है, संसार है, मेरी भावनाएं, मेरी वासनाएं, मेरी धारणाएं, उनके प्रति बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया। मैं उन्हें बधाई देती हूँ। और रमेश भाई ने गुजराती में इतना अच्छा ट्रांसलेशन किया कि मुझे समझ में आ रहा था, मैं सुन रही थी और मुझे समझ में आ रहा था। और अर्चना जी का तो कहना ही क्या है, उन्होंने हिंदी में बहुत ही अच्छी तरह उसको समराइज किया। मुझे एक थोड़ा सा इस पर एक याद आ रहा है, कुछ 4 लाइनें अगर आप कहें तो मैं बोल दूं, अगर आपकी इजाजत हो। अरे है तो वो दिवंगत अभिनेत्री मीना कुमारी का है, लेकिन कुछ इससे रिलेटेड है थोड़ा सा। तो मुझे लगा कि वो कितनी उच्च कोटि की भी शायरा भी रही होगी शायद, कि जब भी आती है गुलिस्तां में बहारें, देख लेती हूँ अपने दिले वीरा की तरफ, और हर नए साल पे महसूस किया करती हूँ एक कदम और बढ़ा शहर खामोशा की तरफ। तो इसी बहुत अच्छा लगा था। तो कि हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दरअसल मेरा हर कदम जा उसी डेट की तरफ का है। क्या बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू वासुमती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, शिंदे साहब मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, तो कुछ विचार आ रहे होंगे खूबसूरत से, तो बताइए। या सब लोग बहुत अच्छे तरीके से they have explained very nice. I must at the outset congratulate all these 3 speakers, wonderfully expressed. Actually 2 facts we all see, that which takes birth, grows, becomes aged and dies. So there is a gap between birth and death. And that gap, which we name as life. So life is that gap between birth and death. So in the light of theosophy, in fact, life is a principle, that which is within us, and it is not dying, it is undying principle. And it is always helpful, eternal, beneficent. And one more characteristic of that life is, it is not sensed by our sense organs. It is beyond our perception of senses. So it is said, it is not heard, it is not seen, it is not smelled. Such is the life in between birth and death. But the theosophy says it can be perceived by the man. Man has capacity to perceive that undying principle, to sense that
with a super sense. By whom? By man who desires that perception. So this is what we all wanted to know about the life, and we are frightened about the death. We are very eager to understand the significance of life, and man has this capacity to perceive the principle which is beyond the senses. So there is no fear of death to a man who is principle oriented, because life is continuous, as it is explained. Consciousness is its expression, vibrations is its expression. Although these expressions are hidden to our senses, we invoke, "Oh, hidden life, vibrant in every atom." So these vibrations are there. And one who studies this, one who desires this perception, he has to practice to resonate with his surroundings. He must fill his mind with truth. He must fill his heart with love. And he must fill his life with service. So human in general have this fear of death, because man knows all that exists persists after some time. So survival has become a problem for him. So one who studies theosophy, definitely there is no fear of death to him. He loses the fear of death, and he begins to love the balance of, he begins to love and live the balanced life. How? Being kind, being contented, expressing gratitude to the whole cosmos, that is the trees and the clouds above. And thus he is free of this fear of death. Yes. And the very good, I would like to quote Buddha's. Somebody asked Buddha, "I want happiness." Then he said in very simple way, remove I, which is ego, and remove want, which is desire. Wow. Again, is this desire, Kya baat? then you see you are left with only happiness. That is what Buddha said. Yes. And therefore, in our theosophical Light on the Path, it is stated, kill out the desire for life. Kill out the desire for life and kill out the ambition. That means we must kill out our I, which is ego. We must kill out our want, which is ambition. So thus we must become desireless. So there should not be desire for life also. Then we can understand what is death. Death, there is no death in theosophy. Everything is vibrant in every atom. And once we understand this, then I think our discussion on the death and life is something, it enlightens us. Thank you very much. Thank and you. Thanks to all people to inspire on this. Thank you. शिंदे जी, मजा ये आता है कि जब पूरी वार्ता तीनों स्पीकर की खत्म होती है और आप चुनिंदा लोग आकर उसमें और ज्ञान बांटते हैं, तो वाकई में वो अपने आप में पूरा हो जाता है। और मैं सोचता हूँ कि त्रिवेणी का जो एक संगम है दरिया की ओर, वो बह जाता है। हर्षवर्धन सेठ जी, आप कुछ कहना चाहें, संक्षिप्त में कहें। उसके बाद सुषमा जी अगर हैं तो उनकी 4 लाइनों के बिना हम समाप्त करते नहीं है, पर अगर वो हाजिर हो और बोल सकें तो बहुत बढ़िया है, और फिर हम समापन की ओर चलेंगे। ईश्वर जी हैं। यस सर, हर्षवर्धन जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट, आवाज नहीं आ रहा है। आप ऑन हैं लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, ओके। हाँ, अभी सही है जी।
સુયાબેન અને રમેશભાઈને અને ખાસ અર્ચનાબેનને ગુજરાતીમાંથી શરૂ કરું, કારણ કે ત્રણે ગુજરાતી મહારથીઓએ કૃષ્ણજીના વિચારો રજૂ કર્યા અને અંસુયાબેનને અંગ્રેજીમાં આજે સાંભળવાનો મને ખૂબ લાવો મળ્યો છે એમ કહી શકું. કારણ કે સામાન્ય રીતે પ્રવચનોની અંદર બહુ જ ગુજરાતી લોકો ખાસ કરીને એ ગુજરાતીમાં જ બોલવાનું પસંદ કરતા હોય છે, અને અંગ્રેજીની અંદર જ્યારે બોલાતી વાત હોય તો એ પણ આપણે એક એવી રીતે સમજવા પ્રયત્ન કરી છે કે જેની અંદર આપણા ક્રોસ સ્ટેટ્સ જે છે એના વ્યક્તિઓ આપણને જે સમજાવે અંગ્રેજીમાં બોલતા હોય ને આપણે એને સમજી શકીએ. પણ આજે અંસુયાબેન તમે ખરેખર સરસ પ્રયત્ન કર્યો અંગ્રેજીમાં, અને કૃષ્ણજીની આ વાતને તમે ખૂબ, જેને કહેવાય ને કે રસપૂર્વકના જે એમના વિધાનો છે એને લઈને અને બહુ જ શાંતિથી સરળતાથી તમે રજૂ કર્યું. એ જ વાતને રમેશભાઈએ પણ, રમેશભાઈ તો બહુ એમની ટ્રાન્સલેશનની વાત પણ સરસ છે, એ પોતે પ્રવચન કરતા તો એ આનંદ જ અદ્ભુત કરે છે. ક્યારે કોઈ એમનામાં એવી ઉતાવળ પણ નથી હોતી, ખૂબ શાંતિથી પોતે સમજ્યા હોય અને બોલતા હોય એવું ફીલ થાય, એટલે બહુ બેસ્ટ વસ્તુ છે. અને બેન बहुत बहुत बधाई आपको हिंदी में बोलने के लिए. હિન્દીમાં ગુજરાતી લોકો હિન્દીમાં બોલનારા બહુ ઓછા રહ્યા છે મને લાગે છે, એમાંના તમે એક છો. हो सकता है मुझे इसलिए मैं हिंदी में या इंग्लिश में बोलूं ताकि हमारे साथ हमारे जो और भी लोग हैं वो उसे समझ सके कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. This is the most important moment when we listen to the people discussing over the subject which is very very subtle. It's a subtle subject, and regarding death, शायद उनका संपर्क गया. नमस्कार तरल जी. जी जी सुषमा जी बोलिए. बस 2 शब्द कहना चाहूंगी सभी वक्ताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कि मुझे ऐसा लगता है कि जन्म से निर्वाण के बीच में मार्ग तय करने के लिए मृत्यु एक पड़ाव है. वाह. जन्म से निर्वाण के बीच में मार्ग तय करने के लिए एक पड़ाव है और बहुत मंगलकारी घटना है. यह एक विश्राम स्थल है. तभी किसी ने कहा है कि मृत्यु वह सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर. शरीर को छोड़कर फिर से नया जो है वो शरीर धारण करता है. तो मृत्यु जो है उससे भय नहीं खाना चाहिए. एक मंगलकारी घटना है, एक विश्राम स्थल है, एक पड़ाव है, और उन्हीं पड़ाव पे ठहरते ठहरते हम निर्वाण एक दिन प्राप्त कर लेते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए. जी 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 जी. और बहुत धन्यवाद. 4 लाइनें आपकी होती हैं हमेशा और बहुत ज्ञानवर्धक. मुझे तो एक छोटा मुंह बड़ी बात अजीब सा ख्याल आता है कि देखा जाए तो इन दिनों भी गणेश जी की स्थापना हुई, तब हमने पिछली बार आइडल वर्शिप के ऊपर बात की और उनकी आइडल की स्थापना होती है उसके ऊपर बहुत सारी बातें एक्सचेंज हुई थी. और अब विसर्जन का समय नजदीक आ रहा है जब हम उसी आइडल को विसर्जित कर देते हैं, पंच तत्वों में डाल देते हैं. तो कुछ मुझे एक संदर्भ ऐसा लगा कि शायद मृत्यु भी एक तरह का विसर्जन है जो पुनः पंच तत्व में चला जाता है और वापस से पैदा होता है. ये सूक्ष्म दिमाग ऐसा कोई विचार कर रहा है, गलत या सही? बिल्कुल सही बात आपने कही कि जिंदगी क्या है, अनासिर का ज़हूरे तरतीब. अभी आपने 5 एलिमेंट की बात करी. जो 5 एलिमेंट है उसका सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन. कि जिंदगी क्या है, अनासिर का ज़हूरे तरतीब, 5 एलिमेंट्स का सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन. और मौत क्या है, इन्हीं अज़्ज़ा का परीक्षा होना. इस सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन का बिखर जाना मौत है. लेकिन वो फिर से जो है पुनः वो फिर जो है वो ऑर्गेनाइज होता है और अल्टीमेटली हम जो है वो अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं. आपकी बात पे मुझे बात आई. धन्यवाद. जी. मतलब पंच तत्व जो चले जाते हैं या कहीं खो जाते हैं वो पुनर्जीवित होने के लिए ही कहीं चले जाते हैं. धन्यवाद सभी को. हर्षवर्धन जी बीच में चले गए थे. हाँ अर्चना जी आप कुछ कहना चाहती थी? नहीं हर्षवर्धन भाई आ गए, वही कह रहे. हाँ, तो अगर वो संक्षिप्त में समापन करें तो फिर हम
आगे बढ़ेंगे। अतुल जी फिर मेरी आवाज आ रही है ना? अब आ रही है, बीच में आपका लिंक चला गया था सर। ठीक है, कुछ बात ऐसी विषय जहन पर में आती है जिसके हाँ। बारे में मैं ये कहना चाहता था कि रिगार्डिंग डेथ people have discussed a lot, and in theosophical society also we have a kind of many articles that we can ponder over. Correct. And mostly whenever the question is asked to Krishna ji, he only thought about life. He never went very deep into this subject because there are superstitions, other stories, and so many things. So talking about death is also a kind of very dangerous thing for us because it is out of experience. If somebody talks about death, that means he has not experienced, he has only heard about the death. It is the experience of other people, those who have gone to the light. Now, correct. About the Peter Sellers experience that is mentioned in the lecture, it is very, very popular kind of story. And people understand that this is really the thing that they accept death in that way. Now, regarding Gurdjieff, I must, within 1 minute, I will tell this example. One day, Gurdjieff thought about death. How should I experience the death? And he experienced the death in the way that he drove the car and he just had the accident very, very deliberately. He struck the car with a giant tree, very big tree. And it was a kind of experience where he just had a kind of understanding about death. He didn't die during that experience. He was injured a lot and he was in terrible, I think, cuts and injuries. Then he was admitted and he thought about that. He wanted to have that experience. So such people, now is it the madness? Is it the thing that we have to experience death? I think he has again lost him. So, Atul bhai. હા, કેશવરબેન હવે આપણને સીઓમ નું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Only fact and that you have to follow. तो मुझे ऐसा लगता है कि डेथ के बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं जी. एनडी जो है नियर डेथ एक्सपीरियंस, उसके तो काफी किताबें हैं, हमें मजा आता है. थियोसॉफिकल सोसाइटी में हमारा जो लिटरेचर है उसमें कई बातें कही गई है और लेडबिटर साहब ने तो कई बातों का समाधान जहां हो सके इतना हमारे कुछ अनुभव या हमारे जो भी अनुभव होते उससे उन्होंने बताया है. अभी वक्त नहीं है, लेकिन आप हर एक से कुछ न कुछ कुटुंबी जनों में जब डेथ होती है ना तो कुछ न कुछ तो अनुभव आपने किए होंगे. दैट इज द एनडी. जी. और ऐसा हम सोचते हैं कि नहीं, ये हमें ये डेथ जो हो रही है वो हम देख रहे हैं और ये इंसान अब जा रहा है. इतना उस वक्त अगर हम कम्युनिकेट कर पाते हैं तो ये हमारे लिए एक एबिलिटी होगी वो एक्सपीरियंस करने की. तो ये भी मैं मानता हूँ कि हमारे थियोसॉफिस्ट वी हैव टू डू दिस. हमने कई 2-3 थियोसॉफिस्ट हमारे जो बुजुर्ग थे उनको मरते हुए हमने देखा, उनके पास बैठे थे, उनका जो एक्सपीरियंस हो रहा था एक तरह से वो हमसे विदा हो रहे थे, ऐसा एक अनुभव जो भी आता था, बैठते थे, समझते थे और इतना शांत और पवित्र वातावरण, एक तरह से एक खुशबू का वहाँ फैल जाना, एक तरह से ऐसा माहौल बन जाना कि ये आत्मा भी हमसे विदा हो रही है. ऐसा अनुभव हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी में किया है. इट्स पर्सनल एक्सपीरियंस. तो अभी आगे नहीं कह सकते, लेकिन समय हो गया है. यहाँ मेरी बात करना चाहता हूँ. बधाई हर एक को. थैंक यू. धन्यवाद. और अतुल भाई. કેશવરબેન હવે આપણને શિવમ નું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. हेलो, मुझे सुषमा जी को देखना है. तो सुषमा जी को रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो चालू रखे. सुषमा जी वीडियो नहीं होता है. नेक्स्ट टाइम. ओह यस. जी. ओके, अभी शिवोहम करते हैं. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे,
न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम much.